हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इजीएस्ट इंग्लिश लर्निंग सोर्स हिंदखोज। मैं हूं इशिता। आज इंग्लिश में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ग्रामर रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ, आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ये आपको बहुत ही मददगार होगी। द टॉपिक्स नेम इज सीक्वेंसेस। व्हाट आर सीक्वेंसेस? तो कभी आपको ऐसा लगा हो आप कुछ बताना चाहते हैं पर स्टार्ट कहाँ से करें ये समझ नहीं आता। अगर कुछ घटना हो रही हो या कोई इंस्ट्रक्शंस देना हो किसी को, पर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट यू डोंट नो। सो इन इंग्लिश देयर इज अ टर्म कॉल्ड सीक्वेंसर। इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस देने में भी मदद करेंगे, साथ के साथ आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स। The words are first, next, then, after that and finally. So 5 words की यूज से आप पूरी स्टोरी या इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। Now let's start with the instructions. आज मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगी, तो आइए चाय बनाना सीखते हैं। First, we take a pan and add a cup of water. Next, we lit up the stove and put the pan over it. Then we add the tea leaves to it. After that, when the mixture starts boiling, we add half cup of milk. Next, when the mixture starts to boil, add sugar suitable to your taste. Wait for 2 minutes and then remove the pan off the stove. Finally, you put the strainer on the cup and pour the mixture. Now throw the leftover part of the strainer and enjoy your hot cup of tea. And yes, the last step, don't forget to pat yourself. So आज मैंने आपको चाय बनाना सिखाया सीक्वेंसर के हेल्प से। अब हम स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। क्या आपको नर्सरी राइम्स याद हैं? तो एक बहुत ही फेमस नर्सरी राइम है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। आइए जैक एंड जिल की स्टोरी को सीक्वेंसर के हेल्प से बताते हैं। फर्स्ट, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. नेक्स्ट, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर. Then both got up and ran to home as fast as they could caper. Finally, they went to bed and mend their head with vinegar and brown paper. तो मैंने जैक एंड जिल की स्टोरी आपको बताई with the help of sequences. तो remember guys, ये 5 sequences, first, then, next, after that, फाइनली, ये याद रखिएगा। और अगली बार किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या स्टोरी सुना रहे हो तो आप इनका यूज कर सकते हैं। होप you learned something new today. Do like, share and subscribe our channel. Thank you so much for watching the video. All the best and happy learning.